Hello, today is the fourth class on chapter sexual reproduction in human. In previous few classes we understood gametogenesis means gamete formation. It includes sperm formation or spermatogenesis and oogenesis. So oogenesis produce ovum, spermatogenesis produce sperm. So sperms are haploid male gamete and ovum is the haploid female gamete. So they carry n number of chromosomes. So today we will discuss fertilization, and if time permits we will discuss post-fertilization events. So last class we discussed menstrual cycle. It is the female reproductive cycle in which three types of changes occur cyclically every month. So that are follicular changes inside ovary, then thickness of endometrium inside uterus, then hormonal changes. So all these three types of changes occur cyclically from the sexual maturity or puberty of female till reproductive phase is over. So when it begins, cycle begins, for the first time in the life it is menarche. Menos plus arch, A-R-C-H-E. Arch means beginning. Month beginning means monthly cycle beginning. So menopause, and during the lifetime of female temporarily the cycle may stop. It indicates pregnancy. So all these things you can refer my last class video. Today my focus will be point 3 and 4. Before that, I want to discuss about the structure of ovum. Let me tell you, spermatogenesis, one phase takes 72 days. Oogenesis take many years because it begins before birth, complete only after fertilization. Sperm is very microscopic but flagellated. Ovum is very large. It's a giant cell. N number of chromosome of ovum means 22 autosome and X. N can be 22 autosome plus X or 22 autosome plus Y. That means male can produce two types of sperm. So fertilization of Y sperm leads to the zygote, means male zygote. That zygote becomes male child. Fertilization of X bearing sperm leads to female embryo. So now we will discuss fertilization under this side head. Fertilization side head number 1, definition, then site of fertilization, then steps of fertilization, and finally significance of fertilization. Under this side we will discuss
So what are the steps? First begin with definition, then I will tell you. Fertilization is the fusion of male and female gamete to form diploid zygote. So in short I can say you fusion of gametes. It is also known as syngamy. Syn means together, gamous means union. In some books, fertilization and syngamy written in different sense. All the events is fertilization. Only the fusion of a nucleus and cytoplasm, that is syngamy. So here we will discuss all the events that leads to syngamy or fusion of male and female nucleus. That is also called as amphimixis. So definition is over. Fertilization is the process of fusion of male and female gamete to form a diploid zygote is fertilization. Now, you know fertilization location or site can be outside female body or can be inside female body. So those are aquatic animals. In their case, sperm motility is not a problem because water is the medium of sperm motility. Human is a land animal. So land animals like humans, fertilization is inside mother's body. So internal fertilization occurs. Site where actual fertilization occurs, internal fertilization. Internal fertilization. So site of fertilization is inside mother's body. Exactly where? Exactly, suppose this is the fallopian tube. So fallopian tube begins with a opening and finger-like structures. These finger-like structures are called fimbriae, and this is a part of uterus. So this fallopian tube joins with the uterus or opens into the uterus. Similarly, another fallopian tube from that side also opens into the uterus. And to the uterine wall, ovary attached. You know, a mature Graafian follicle rupture to liberate secondary oocyte. That is not ovum. Clear? So this is called ovulation, release of ovum, but actually it is not ovum, it is a secondary oocyte. That means previous stage of ovum. So this secondary oocyte will be sucked into the fallopian tube. This is the abdominal cavity of female. So during ovulation, this fallopian tube, suppose this is ovary. This arm is a fallopian tube. Suppose this is uterus. So what will happen? The fallopian tube will come very close to the ovary, and like this the fimbriae will start moving, and the entire fimbriae and inside the fallopian tube cilia is there. Cilia. So the ciliary movement and this movement of finger-like fimbriae will shock the secondary oocyte. I told you female gamete is non-motile. So that's why female gamete cannot move. It needs some assistance, and that assistance will be provided by this fimbriae and the beating of cilia or ciliary beating.
So this egg should reach at this junction. So repeatedly I am saying, lifespan of gametes are very short, limited. Sperm can survive maximum 72 hours. Egg can survive 24 to 48 hours. So within that limited time period, they must meet each other. So under the steps, first, insemination. Human reproduction को लक्ष्य करी insemination. Then second step is meeting of gametes. Then third step is acrosomal reaction. Fourth step is egg activation or cortical reaction. Cortical reaction, then egg activation. You can write cortical reaction under egg activation. Then final amphimixis. Amphimixis or syngamy. So we mean fertilization is syngamy. Clear? So now come to this diagram. I told you where fertilization occur. Now fertilization occur inside mother's body. Clear? So now this is the female reproductive tract or vagina. So during insemination, male deposit semen inside the female tract. How much volume is 2 to 5 ml. So that semen includes two things: the fluid part, seminal plasma, and the sperm itself. So sperm near about 200 to 300 million. All sperms are not healthy. Out of that, 60% should be healthy, normal shape and size. And after deposition, the sperm need some assistance because such a long distance require lot of energy. I told you the middle piece of sperm. The middle piece of sperm contain only 25 mitochondria. This is the distal centriole, proximal centriole. This is the axoneme, and this middle piece contain 25 mitochondria. So mitochondria provide energy for beating of tail or flagellum. So if the sperm start beating right out from here, all energy will spend. It cannot reach here. So this site is the site for actual fertilization. Very important one more question. Where fertilization occurs, your answer is not only internal. This will not give you the mark. Right answer is ampullary isthmic junction. Ampullary isthmic junction. Ampullary isthmic junction. Now refer this diagram. This straight portion of fallopian tube or oviduct is called isthmus, and this broad wider part of fallopian tube is called ampulla. So this ampulla and this isthmus, this is the ampullary isthmic junction.
So when fertilization occur, that means within their lifespan, secondary oocyte must reach here. All the sperm, swimming sperm, they should reach here. Clear? So meeting of gametes. Before that, insemination, deposition of male gamete. So if a male deposit outside the vaginal orifice, even in the darkness, ultraviolet radiation can kill the sperm. So unless the semen is deposited inside female body, there is no chance of pregnancy, no chance of fertilization. So this is very important point. Meeting of gametes. Gamete must meet within their limited lifespan. That means all sexual act will not lead to fertilization. I told you menstrual cycle, ovulation occur mid phase of menstrual cycle. This is suppose 28 days. If ovum released at mid cycle or 14th day, and in that same day insemination occurs, then fertilization chance is nearly 100%. I told you in last class, sometimes it happens ovulation occur any day between 10 to 17. This is the risk period. So if insemination or deposition of male gamete occur between these days of menstrual cycle, then fertilization chance is more, pregnancy chances will be more. So beyond that, the ovulated egg will die. I told you, suppose 14th day ovulation occur, that cannot survive more than 2 days. Ovum cannot survive more than 2 days. That means ovum will die. And then if insemination occur after the death of the ovum, स्पर्म लोग पहुंचेंगे, ढूंढते रह जाएंगे, एग तो जिंदा है ही नहीं, फर्टिलाइजेशन थोड़ी ना होगा. So there will be no fertilization. That's why I am repeatedly telling you, meeting of gametes should occur within the limited lifespan of gametes. Otherwise, there will be no fertilization. Clear? Now, sperm motility. I am discussing under meeting of gametes, sperm motility means sperm movement. Initially, the deposited sperm, they are not motile. They are just like dead fish in flowing water. So dead fish cannot swim. It will roll like that. Similarly, the condition is here. So that sperm needs some activation. Then only it will beat. Initially, after insemination, the uterus will contract, will suck the semen. So it is assistance number 1. And the fallopian tube, the muscular contraction, they will suck the deposited gametes. And the female reproductive tract will secrete some fluid so that the acrosome initially contains some substances. That substance will be dissolved. तले स्पर्म रो टिप रे जो एक्रोजोम अछि से एक्रोजोम ऊपर किछि कोटिंग्स थाए. जेतेबेले स्पर्म ता डिपोजिट हुए से स्पर्म मानक देह रे सरफेस रे एक्रोजोम सरफेस रे किछि कोटिंग अछि. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रो जो फ्लूइड बाहरियो से कोटिंग टाको डिसॉल्व करई दबो. तेणु स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस रे किछि रिसेप्टर
एक्सपोज हे जिवो एंड दिस इज कैपासिएशन ताले मीटिंग ऑफ गैमेट्स तापरे एक्रोसोमल रिएक्शन हबो एक्रोसोमल रिएक्शन किए करि परिबो all sperms that will reach the ovum all cannot do acrosomal reaction only those sperms they are successfully capacitated they can only do fertilization they can only do acrosomal reaction ताले एटी गोटे इंटरेस्टिंग पॉइंट आसीगला कैपासिटेशन कैपासिटेशन कैपासिएशन कैपासिटेशन ताले व्हाट इज कैपासिटेशन कैपासिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ activation of sperm so that sperm will be motile so that the active sites present on the plasma membrane of sperm will be exposed. Previously some materials blocked or covered the sperm and the flagellar beating हो नथिला ताले कैपासिटेशन परे स्पर्म रो एक्रोजोम उपरे एक्टिव साइट एक्सपोज हबो आउ फ्लाजेलर बीटिंग हबो ताले बुझेला कि दिस प्रोसेस विल रिक्वायर 4 to 6 hours कैपेसिटेशन कोठी हबो फीमेल ट्रैक्ट भीतर हबो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो फ्लूइड वॉश आउट कर दो 4 ରୁ 5 घंटा भीतर स्पर्म कैपेसिटेटेड हेला प्रोसेस इज कैपेसिटेशन ताले से कैपेसिटेटेड स्पर्म एक्रोजोमल रिएक्शन करि परिबो ताले एक्रोजोमल रिएक्शन पूर्वरु वी नीड टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम ताले ओवम रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहरे सब एक बैरियर्स अछि सुरक्षा चक्र अछि कारण ओवम will protect herself from the dahra sperms tale sperms guda ko simultaneously approaching tale ovum kon karibo we'll see eta levi do site fertilization occur inside the female body that is called in vivo fertilization it in vivo likhi do in vivo in vitro means inside test tube means outside body artificial fertilization can occur outside the mother's body that is called in vitro fertilization IVF naturally fertilization occur inside that is in vivo fertilization where exactly it occurs now it occurs in ampullary isthmic junction now we discussed insemination deposition of male gamete along with seminal plasma the male gamete will be sucked into the female tract and gradually within 4 to 6 hours male gamete will undergo capacitation so that the sperm will regain the power of motility and the sperm will move or propelled forward आगे चलिबो and it will surround the egg or a secondary oocyte all around now we'll discuss about the structure of ovum ro structure ta kon you see ovum is just a eukaryotic cell with a nucleus. Human egg by human secondary oocyte is alecical. Alecical माने कौन? Alecical means no yolk. बार्ड मानकर एग रे यक अछि
तेणु बार्ड मान एग रे जो पोल रे यक रही ताको कहते भेजिटाल पोल एब एम्ब्रियोनाल पोल आ जो पटे न्यूक्लियस रही ताको कहते एम्ब्रियोनाल पोल बा एनिमल पोल। तेणु एठी भी मु धर कहूँ एटाको एनिमल पोल जानिया केमती ताने प्लाज्मा मेम्ब्रेन रू एक्सट्रूशन होकरी पोलार बॉडी बाहर जाइथिबो। एटा धर सेकेंड पोलार बॉडी माने सेकेंडरी ओसाइटटा एटा फास्ट पोलार बॉडी सेकेंड हेनी स्पर्म टच करनी मो स्ट्रक्चर पढुछि तले जस्ट फास्ट पोलार बॉडीटा अलग हेछि एटा सेकेंडरी ओसाइट तले सेकेंडरी ओसाइट रे दीटा जिंस रहला यार साइटोप्लाज्म रहला एटा को कोन कहबा ना ऊप्लाज्म। एग रो साइटोप्लाज्म को ऊप्लाज्म कहते। एग रो न्यूक्लियस रहला दिस इज न्यूक्लियस ओवम रो न्यूक्लियस बा सेकेंडरी ओसाइट रो न्यूक्लियस या चारिपटे गोटे नॉन सेलुलर जेली लाइक स्ट्रक्चर्स अछि। दिस नॉन सेलुलर जेली लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। तले एटा को लेबलिंग कर दूचे एठी जोना पेलुसिडा इंग्लिश रे पेलुसिड जोन कहयो। या चारिपटे ग्रानुलोसा सेल गुडी को ए भलिया रेडियली इलोंगेटेड हेछि लंबाळिया हेछि एमती पूरा एंटायर चारिपटे अछि हला। ताले दिस स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड कोरोना रेडियाटा। सूर्यंकर जेमती चारिपटे गोटे किरण आसे तेणु आम सूर्यंक चित्र कला बेले एभलिया टे कर दउ से भला। तेणु एठी भी से भला देखा जाउछि कोरोना रेडियाटा। ताले एटा कोरोना ए लेयरटा को कोरोना रेडियाटा। देख एटा होछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम लिखि दोछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोरोना रेडियाटा बाहर जो सेल माने रहिले दीज आर ग्रानुलोसा सेल्स एमाने चारिपटे अछंती प्रेजेंट ऑल अराउंड। दीज आर ग्रानुलोसा सेल्स बा फॉलिकुलर सेल्स ग्रानुलोसा सेल्स बा फॉलिकुलर सेल्स कारण ग्राफियन फॉलिकल रो ओव्युलेशन फल रे एटा बाहर छी। तेणु ओव्युलेशन परे ए स्ट्रक्चरटा रिलीज हेछि। तेणु ए स्ट्रक्चरटा जो सेकेंडरी ओसाइट जस्ट ओव्युलेशन परे एको मु पढुछि फर्टिलाइजेशन हेनी एठी पहुंचिनी पहुंचला परे फर्टिलाइजेशन हो। तेणु या चारिपटे कौन अच्छे ना गोटे फास्ट पोलार बॉडीटे बाहर। तेणु जो साइड रे बाहर सेटा हमर एनिमल पोल ऑपोजिट साइड हमर वेजिटल पोल। ताले फार्मूला है एनिमल पोल किसको कहें ना द पोल वेयर द पोलार बॉडी एक्सट्रूडेड। ओवम रो सरफेस रु जो सरफेस रे पोलार बॉडी रिलीज हेथिबो बाहरी जाइथिबो ताको एनिमल पोल कहबा। कारण एठी तो यक नाही बार्ड रो एग रे सुविधा यक थिला जो पोल रे यक अछि कहबी सेटा एम्ब्रियोनाल बा वेजिटल पोल। ऑपोजिट पोल जोठी न्यूक्लियस अछि ताको कहबी एनिमल पोल। एठी टिके यक नथिबारो आमे एई फार्मूला यूज करिया बुझेला। तले नाउ यू थिंक when sperm will come in contact eta dharo one sperm tale sperm has to penetrate to touch the egg plasma membrane। मु जदि नंबरिंग करिवि तले फास्ट ये कहा को पेनिट्रेट करिवो ग्रानुलोसा सेल्स को। सेकंड कहा को पेनिट्रेट करिवो कोरोना रेडियाटा। थर्ड का को पेनिट्रेट करिवो जोना पेलुसिडा। फोर्थ रे जाईकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करिवो। क्लियर। तले आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दीज थ्री लेयर्स प्रेजेंट
दे आर टुगेदर कॉल्ड एग बैरियर्स। बुझौची ताले एग रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर जो लेयर अच्छी ए तीनटा लेयर ग्रानुलोसा सेल बा फॉलिकुलर सेल कोरोना रेडिएटा जोना पेलुसिडा ए तीनटा लेयर को कहबा एग बैरियर्स। ताले एक्रोजोमल रिएक्शन फल रे स्पर्म ता धीरे धीरे खोली खोली की पळे आसीबो एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करिवो। ताले जो स्पर्म खोलिबा आरंभ करिवो माने एक्रोजोमल रिएक्शन आरंभ करिवो तार कैपासिटेशन हिथिबार अछि। ता माने नुहे जे समस्ते सक्सेसफुली फ्यूजन हे जिवे नो। आउट ऑफ दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज कारण एज ए रूल फर्टिलाइजेशन इज मोनोस्पर्मी। मेनी स्पर्म कैन डू एक्रोजोमल रिएक्शन बहुत स्पर्म करिवे किंतु अल्टीमेटली फाइनली ओनली वन स्पर्म कैन टच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्विमिंग कंपटीशन बोला जे टच कर देला तापर आउ कोनोसी स्पर्म टच करि परिबे से ला विनर। ताले देखिबा एटी कोन मेकानिज्म अछि परे परे कहबी हाउ दिस स्पर्म ए एग अवॉइड पॉलीस्पर्म। गोटे स्पर्म को ग्रहण कर सारला परे गोटे स्पर्म छुईला अन्य मान को केमती विदा करिवो तोड़िवो ताकू कहा जाउची टू अवॉइड पॉलीस्पर्म। तार भी मेकानिज्म अछि डिस्कशन करिवा ए कॉर्टिकल रिएक्शन रे सेटा करिवे। तले ओवम बा सेकेंडरी ओसाइट रो स्ट्रक्चर जानि गेलो ड्यूरिंग एक्रोजोमल रिएक्शन या को अदरवाइज कोन कहा जाय ना बैरियर पेनिट्रेशन। बैरियर पेनिट्रेशन मु कहलेनी एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 बैरियर्स। ए बैरियर को पेनिट्रेशन करिवा पाई एक्रोजोमल रिएक्शन दरकार। तेणु एक्रोजोमल रिएक्शन अदरवाइज कैन बी नोन एज बैरियर पेनिट्रेशन। तले एठी स्टार्ट करछि व्हेन ए स्पर्म टचेस ऑलरेडी इट इज कैपेसिटेटेड। कैपेसिटेशन न होइथिले किछि लाभ नाही एक्रोजोमल रिएक्शन करि परिबो। I told you acrosome is a very big lysosome. Spermatid रो Golgi complex से Golgi complex रो acrosome हेची 1 मार्क क्वेश्चन। तले acrosome भीतर जो केमिकल्स अछि ताको कोन कहिथिली स्पर्म लाइसिन्स। सेतेबेले मु कहिथिली स्पर्म लाइसिन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एंजाइम्स। तले सेही मेनी एंजाइम्स माने आमे तीनटा लेयर क्रॉस करिया को पड़िबो तेणु तीनटा एंजाइम रहिछि। तले स्पर्म लाइसिन इंक्लूड्स फर्स्ट लेयर कोन ग्रानुलोसा सेल्स। देखो ग्रानुलोसा सेल भितरे सीमेंटिंग सब्सटेंस अछि। सेल गुडा को स्टिकी लागिकिर रहिचंती से स्टिकी केमिकल्स ताको तार ना होचे हेलुरोनिक एसिड। तेणु हेलुरोनिक एसिड्स दे आर द इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस दैट होल्ड द ग्रानुलोसा सेल्स टुगेदर। तले इटा भितर जेमती बाली मसला दुर्बल हे गेले इटाटा ठेली देले गड़ी पड़ियो से भला एठी हेलुरोनिक एसिड होल्डिंग द सेल्स टुगेदर। तेणु एठी को एंजाइम रहबो ता ना हला हेलुरोनिडेज। ए हेलुरोनिडेज एंजाइम ग्रानुलोसा सेल रो हेलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करियो। बुझुची आराम से। ताले एक स्पर्म ता मूवमेंट करिके आसीबो। आ गोटे वेरी इंपोर्टेंट कथा देखो स्पर्म ता जोटी कांटेक्ट करिवो टॉर्च लाइट राति रे पकेले से लाइट ता गोटे बीम हेकरी जाउची ना लाइट ता पूरा एवळा छिटकी की जाउची चले ना। सेमती एक्रोजोमल रिएक्शन ता भी एटी जोटी टच करिवो सही जगह रे एमती पेनिट्रेट करिके चलिवो। तले जो केमिकल्स रिलीज हैला एक्रोजोम रो एंटी मेम्ब्रेन फ्यूजन हे गेला रिलीज हैला स्पर्म लाइसिन से लोकली डिजॉल्व करी चलिवो।
बुझेला डिजल्व कर चलला परे ए देखो ये एक्रोजोम रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो गोटे एमती ट्यूब भाया स्ट्रक्चर्स बाहर से पूरा सोड तलवार भाया ए लेयर मान को क्रॉस कर चलथिबो एबे नेक्स्ट लेयर ता कोन कोरोना रेडिएटा ताले को एंजाइम दरकार कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ताले तीनटा लेयर को डाइजेस्ट करिया पे तीनटा एंजाइम एटा सेकंड लेयर को डाइजेस्ट करिवो थर्ड लेयर ता कोन हमर व्हिच वन इज द थर्ड लेयर जोना पेलुसिडा ताको डाइजेस्ट करिया पे जोनालाइसिन डिसॉल्व हो गला जोनालाइसिन बा ताको बेले बेले एक्रोसिन कोंदी ताले स्पर्म लाइसिन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंजाइम्स because these 3 enzymes are necessary for barrier penetration of 3 barriers ताले फाइनली कोन हो स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन will touch the egg plasma membrane जो जगह एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन टच करिवो धर एटा एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व कर देछि जोनालाइसिन ताले स्पर्म रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एमती तो न्यूक्लियस अच्छी टच कर देछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एटा हला 1 नंबर हमर विनर लिस्ट रे फर्स्ट गोल्ड मेडल पाइबो आ सब स्पर्म पछरे अछंती गोटे माइक्रो सेकेंड रो इंटरवल रे भी ऑल विल बी लूजर ये गेनर हेला तले एटी कोन हो ना एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ता स्लाइटली टिके बल्ज करी उठिबो तले व्हेन द स्पर्म विल टच द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बल्ज टिके फुली उठिबो ताको कोनते कोन ऑफ रिसेप्शन तले कोन ऑफ रिसेप्शन रे स्पर्म ता एंट्री करिवो तले एक्रोजोमल रिएक्शन परे कॉर्टिकल रिएक्शन why it is essential so that other sperm may not touch अन्य स्पर्म भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच कला माने समस्त न्यूक्लियस छाड़ देबे ताने एटी कोन हेला 2n 3n 4n एमती नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ी जीवो प्लॉइड बढ़ी जीवो ताने एकटार डेथ होबो एटा सेल डिवीजन करि परियोनी मरियो ताले पॉलीस्पर्मी को एडिया को पड़ियो ताले पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करिया टेक्निक देखो एग साइटोप्लाज्म एटा भल से सुनो एग साइटोप्लाज्म contain outer ectoplasm and inner endoplasm outer ectoplasm रे एमती सान सान vesicles अछि these are called cortical granules पूरा एमती भर्ती cortical granules ताले से cortical granules भितरे fluid अछि जोटी स्पर्म टच करिवो इमिडिएटली तार सरफेस रे गोटे इलेक्ट्रिकल करंट फास्ट रे पढुथली न्यूरॉन रे डीपोलराइजेशन सेही होले गोटे करंट स्प्रेड करि दियो आ तुम जानछ करंट केते स्पीडली स्प्रेड करे तने एई जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट चेंज हे गला आगु कोन थिला आउटसाइड पॉजिटिव इनसाइड नेगेटिव वर्तमान जोटी टच हला सेटू सोडियम भीतर को आसी गला ता माने कोन हेला भीतर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव ताकू मु कोन कहबी डीपोलराइजेशन सेही इवेंटटा स्प्रेड करि दिबो करि गेले कोन होबो ना ए कॉर्टिकल ग्रान्यूल्स एटा गोटे वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कॉर्टिकल ग्रान्यूल्स विल बी एक्सपेल्ड तले कॉर्टिकल ग्रान्यूल्स गुडी को बाहर को फ्यूजन हे जिबे तांकर फ्लूइड गुडा कर एक्सोसाइटोसिस होबो एक्सोसाइटोसिस हेले ए जोना पेलुसिडा ऊपर को गोटे हल्का लेयर ता थिला ताकू को जाउची पेरीवाइटेलाइन मेम्ब्रेन जोडा को मु एठी कोइ नथली पेरीवाइटेलाइन मेम्ब्रेन तनो सेठी गोटे पेरीवाइटेलाइन मेम्ब्रेन एमती लागि थिला लैमिनेशन हला बेले प्लाज्मा मेम्ब्रेन संगे रे तमे सर्टिफिकेट जेंती लैमिनेशन कर दोजो
सर्टिफिकेट ऊपर लैमिनेशन जरी से बेला प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर लागिकी थिला पेरीभाइटेलाइन मेम्ब्रेन ये माने जो पानी छाड़िले सेटा भासी उठिला एमती चारिआडे भासी उठिला ताले एठी गोटे जोना पेलुसिडा आ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भितरे गोटे स्पेस क्रिएट हो गला ताको कहबा पेरीभाइटेलाइन स्पेस ताले से पेरीभाइटेलाइन स्पेस अतिक्रम करी आउ स्पर्म आगे पारे ये फ्लूइड तार दे चलची पेरीभाइटेलाइन मेम्ब्रेन को घसई नहीं पूरा फ्लोट हो जाउची ताले स्पेस टा बड़ी बड़ी चलची आ स्पर्म तार एंती बाड़ी कोचड़ी होतो तार सब एनर्जी सरी जीवो पूरा मरी जीवो शांत हो जाओ कने स्पर्म पेनिट्रेट करि परियो नहीं ताले एटी मोर क्वेश्चन होची हाउ पॉलीस्पर्म इज अवॉइडेड प्रथम कथा हला ड्यू टू कॉर्टिकल रिएक्शन पेरीभाइटेलाइन स्पेस क्रिएटेड सेकंड हला भाइटेलाइन मेम्ब्रेन टा टाण हो जीवो टफ हो जीवो आगुरु टिके कागज भलिया थिला पेपरी वर्तमान एटी से टफ लेयर ताकू कहबा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ताले ए दुईटा जिनस तैयारी हवा जोगु प्रथमे कोन हला ना पेरीभाइटेलाइन स्पेस पेरीभाइटेलाइन स्पेस तापरे कोन हला ना फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ए दीटा जिनस पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कला ता माने स्पर्म का सक्सेसफुली वर्तमान एग साइटोप्लाज्म के एंटर कला कॉर्टिकल रिएक्शन हेला एग एक्टिवेशन ताने एग एक्टिवेशन रे बहुत घटना आसुची आसंता क्लास रे कहबो गुडा इवेंट्स वर्तमान एटा मियोसिस 2 करिनी मु कोन कहउतली सेकेंडरी ओसाइट विल कंप्लीट मियोसिस 2 वंस ए स्पर्म टचेस तले स्पर्म टच कर सलानी ताने मियोसिस 2 कंप्लीट हो कंप्लीट हेले आउ गोटे पोलर बॉडी बाहरियो एटी गोटे पोलर बॉडी बाहरी पळे आसी सेते बेले मु एटा को कहबी ओभर वर्तमान मु गोटे पोलर बॉडी करछि तण एटा को लेबे दोछि एटा कहछि सेकेंडरी ओसाइट हला आ 10टा मिनिट देथिले पुणे आसन